मैम खिड़की पे पर्दा लगा दीजिए ना। खिड़की में पर्दा लगा दे। ठीक। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, वाह, एकदम देव कृष्ण हरे कृष्ण बोला है ना, एकदम ये जीनियस है। हम तो समझ यस मैम। हाँ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे विजिबल होंगे। अब तो दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम अब दिख रहे हैं। मैम अभी भी आ रहा है। हाँ, मैम उतना अभी अच्छा। अच्छा कल ये थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। और वो जो क्लियर करता है वो तो क्लास कर रहा है। ठीक है, कल हम विजिबल हो जाएंगे। दिखाई तो दे रहे हैं। हाँ यस मैम। आप दिख रहे हैं, अब आप दिख रहे हैं। लाइट आ रहा है। टर्न ऑन द लाइट। अब देखो मैम तो कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट? यस मैम। यस ठीक है ना। मैम अब लेकिन Yes, अब दिख ma'am. रहे हैं हल्के हल्के। हाँ दिख रहा है ना। मैम कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट? हाँ चलो चल अब ये how many have magnets today? How Ma'am, many I have have magnet? magnet. So your magnet, Ma'am. हाँ, if you have, You have who is Kumar? A single मैम Kumar? सचिन कुमार है। कुमार कौन है? दिखाया नहीं अपना फोटोग्राफ। मैम सचिन मैम। मैम हम Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hitansi. Hitansi. हाँ, read page. Activity 5 has been finished now. No, ma'am. Read after next. Before properties of magnet, there is interaction between the magnet and facing opposite pole. Activity related to magnet facing opposite pole. Okay, ma'am. Read it. मैं लगाऊंगी ना, ऐसे नहीं लगता है ये। अरे आयतुल और अलबीना दो हो, दो मिल करके अपने छोटे भाई बहन को नहीं संभाल रहे हो। अनन्या को तो एक को संभालना पड़ता है। चलो जल्दी, बहुत लेट हो गया, क्लास शुरू करते हैं। चलो मैम विच पेज नंबर? एक्टिविटी 5। ओके मैम। मैम पढ़ाई नहीं। Good morning, ma'am. Some are adding so late.
मैम From next day, I'm not going to wait for anyone. एक्सक्यूज मी मैम हाँ, मैम एक्चुअली मेरे इस फोन का चार्ज बहुत लो है और मैम इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो मैम मैम आप मेरे को दूसरे नंबर से ऐड कर देंगे मैम मैं वेटिंग रूम में हूँ। अब वेटिंग रूम को तो हम देख ही अरे तो रहे हैं। वीडियो देख लेना ना, वीडियो देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे। हेलो, वीडियो देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। हाँ नहीं, चलो वेटिंग रूम में एडमिट है, एडमिट ऑल हमने कर दिया। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मैम। चल, 4 मिनट। इच्छा थापा, इच्छा थापा, आंसर भी नहीं देता है ये लोग एकदम। जया भारती, सब म्यूटेड है। यस मैम। हाँ, यस। रीड एक्टिविटी 5। हाथ थोड़ा सा कर रहा हूँ। Rest of you mute your mic. Jaya Bharti, read activity 5 and rest of you mute yourself. Okay मैम। Let us now keep two bar magnets under transparent paper that has iron fillings sprinkled on it. Let the like poles of the bar magnets face each other. What happens? The iron fillings between the bar magnets appear to be pushing away from each other. Let us now change the position of the second bar magnet so that the unlike poles face each other. What do we observe? The iron fillings between the bar magnets appear to be pulling towards each other. Can you explain why it is so? Stop. All of you have studied yesterday कि when opposite pole, same pole. You have a study about the same pole. Suppose that I have two magnets in my hand, two magnets, and this is south pole of the magnet, and it is north pole of magnet. When the magnets facing same pole and it is covered with the plastic sheet and some iron filling are sprinkled on the magnet, we will see a rearrangement of the iron filling in such a way they are repulsing to each other. And in between them, nothing is there. All the iron fillings are appear to push away from each other. एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। ये अगर दोनों मैग्नेट जो है सेम पोल को फेस कर रहा है। घूस दे देंगे तो क्या करेगा बुला के? नेक्स्ट क्या करेगा घूस देने पे? क्या करेगा? आयुष, आयुष अपने आप को म्यूट कर। हद हो गया, सबको सिखा चुके हैं। जहां घर में अगर मम्मी नहीं समझ पा रही है, अरे अपने माइक में म्यूट करेगा, अपने आप को कैसे म्यूट करेगा? क्या हो रहा है? अपने आप म्यूट कर सकता है बच्चा, और जब घर में आवाज होने लगे तो तुरंत म्यूट कर देना है। और केवल मेरी आवाज को सुनना है, हमको देखना है क्या एक्टिविटी करवाना है, उसको देखना है। आश्विक प्रांजल अभी सो करके लगता है उठा है। आश्विक, next, if we place two magnets in such a way that they are facing opposite pole, are you able to each two magnets?
Yes, ma'am. हाँ, Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. if these two magnet facing opposite pole and then the plastic sheet, it is covered with the plastic sheet, and after that iron filling are a sprinkle, a rearrangement of iron filling, so there is attraction between the opposite pole of the magnet. दोनों पोल के बीच जो अपोजिट पोल है वो उनके बीच क्या है कि अट्रैक्शन है. तो now on the basis of these activity we came to know about the properties of bar magnet. What are the property? First, attractive property. The magnet is capable of attracting a small pieces of iron, steel and cobalt, etc. All the magnets, bar magnet, have capacity to attract the object that is made up of iron, steel, cobalt, and etc. Means the object which is made up of magnetic material. Next, directive properties. A freely suspended magnet always point approximately along the geographical north and south direction. Approximately means करीब करीब, है ना, करीब करीब. When a magnet is freely when the magnet is freely suspended, it always stay in the south and not exact in south and north direction. Somewhat it is south and north direction. This is known as directive properties of the magnet. Now, magnet has two magnetic poles. Even we break the magnet in a small pieces. I'm breaking the magnet in a small pieces. These two magnets, whether it is very small or big, it doesn't matter. All the pieces of magnet having two magnetic poles, south pole and north pole, means magnet have two poles. Next property is like pole of magnet repel to each other, whereas unlike pole of the magnet attract to each other. Albina has red hand. What is matter, Albina? Albina? Ayatul? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, क्या? हैंड रेज की हो तो कुछ प्रॉब्लम है? No, ma'am. नो. अनन्या? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ. Ma'am, what is the meaning of repel? रिपेल मतलब दोनों को एक दूसरे को मूव, दूसरे को पुश करता है. रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन के अपोजिट. अट्रैक्शन माने अपने ओर आकर्षित करना. रिपल्सन मतलब हेट करना, अपने से दूर भगाना, तो वो है रिपल्सन. Yes, ma'am. Okay, ma'am. हाँ. Thank you so much. वेलकम. तो ये जो है अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, वेयर एज लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर. एक दूसरे से दूर भागता है. एक इंटरेक्शन देखे थे ना तुम लोग कल, जो ये क्या है कि one freely suspended magnet tie up with the thread, and when the same pole of another magnet is brought near the freely suspended magnet. I have shown yesterday. Today I am showing again. कि ये suppose that it is freely suspended magnet and pointed structure is north pole, whereas a blunt structure is the south pole. When the we
bring the another magnet towards the freely suspended magnet, when they facing same pole, they move away from each other. एक दूसरे से क्या होता है, दूर भाग जाता है, due to repulsion. So a like pole of magnet repel to each other, whereas unlike pole of magnet attract to each other. अब now Earth as a magnet. Who will read? Satya. You Ma'am, read now? Shreya Singh. Shreya Singh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, श्रेया, अगर सत्या का नाम लिया तो हमने गलती कर दिया है? किसी किसी को एक एक को अपॉर्चुनिटी देंगे ना, सभी को तो रोज हम नहीं जा रहे हैं, मेरे पास टाइम, मेरे पास या तुम्हारे पास टाइम तो उतना नहीं है, तो सबको एक एक दिन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. चलो सत्या श्रीवास्तव. Yes, ma'am. हाँ, read. Earth has a magnet. We can understand the direction of a bar of a magnet Bar. by realizing bar magnet realizing that the earth also behaves like a huge magnet. Like any other magnet, we can think of the other also as a magnet having two magnetic poles. The magnetic poles of Earth do not coincide with its geographical poles. एक second. All of you repeat after me. Coincide. बोलो मेरे साथ. Coincide. Coincide. हाँ, चलो next. चलो read. सत्या. Okay, ma'am. हाँ. The pole near the geographic north pole of the Earth is regarded as the south pole magnetic pole of the Earth magnet. Likewise, the pole near geographic south pole is regarded as the north magnetic pole of Earth magnet. Next, just wait. I'm giving name. Riddhi 6E. No. Sakti 6E. Sakti. Read, Yes, ma'am. read Earth as a magnet once again. Okay, ma'am. Our Earth has a magnet. We can understand the directional property of a bar magnet by realizing that the Earth also behaves like a huge magnet. Like any other magnet, we can think a huge magnet. Like any other magnet, we can think of the Earth also as a magnet having two magnetic poles. The magnetic poles of the Earth do not coincide with its geographical poles. The pole near the geographic north pole of the Earth is regarded as the south magnetic pole of the Earth. Likewise, the pole near the geographic south pole is regarded as the north magnetic pole of the Earth magnet. Very good. Why when the bar magnet is freely suspended, why it coincide with the geographical south and north direction? Why it is so? Why not in east and west direction? Why the magnet remains in the south and north direction? Why it is so? So for understanding these things, is suppose that this is a magnet, and when we are suspending it, freely suspended, it always aligned in the south and north direction. Why it is so? क्यों?
ये साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है. इट इज बिकॉज कि अर्थ हैविंग ह्यूज मैग्नेट. मैम मैं बोलूं पहले पढ़ाने मैम दो. कैन आई सी एक सेकंड पढ़ाने दो. Ma'am, I can answer. Ma'am, I can answer your question. हाँ, just wait. After teaching, I will ask question. I must ask question. हाँ, just wait. All of you, just wait. When Ma'am, you have asked na that why if magnet is suspended, it takes north and south direction. now, when the magnet is freely suspended and it lying in the south and north direction, because Ma'am, can I answer? Ma'am, just wait. It is so, Earth having huge magnet. The magnet remains freely suspended bar magnet remains in the south direction because of Earth magnet. Earth having in the inner core of the Earth having huge magnet, and this magnet have North Pole towards the geographical south direction, and North Pole of the magnet is in geographical south pole, south direction, and the south pole of the Earth magnet is in geographical north direction. And that's why when the magnet is freely suspended due to attraction between the freely suspended south pole with the north pole of the Earth magnet, freely suspended north pole with the south pole of the Earth magnet. You know how the Earth is formed. Earth is formed by the different mineral, different metals, and the iron, cobalt, and nickel. These three elements are present in huge amount in the innermost layer of the Earth. That is known as inner core of the Earth. And due to presence of huge amount of iron, steel, iron, cobalt, and nickel. Iron, cobalt, and nickel is present in huge amount in the innermost layer of the Earth, in the core of the Earth, and this makes the Earth huge magnet, and the Earth magnetic poles remains just opposite to the geographical direction of the Earth. North pole of the Earth remains in the south direction, whereas south pole of the Earth remains in the north direction. And Earth magnets attract the each and every magnet present on the Earth. And if that's why if we suspend the Mars magnet, it always remains in the south and north direction. Now, making a magnet. How we can make a magnet by magnetic material? So for we can make the magnet by different methods. In class 6, you have studied 3 different methods. What are that method? For making a magnet, an iron bar is freely suspended, and a hammer is taken, and the freely suspended bar of iron is hammered from one side. If we hammer from one side,
the bar of iron behaves like a magnet. For making a magnet, we will take a iron bar. आयरन बार को लेते हैं, हाँ, मैग्नेट बनाने के लिए क्या लेते हैं? आयरन बार। और आयरन बार को क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। और फ्रीली सस्पेंड मतलब इसको एक थ्रेड से या फिर रोप से टाई अप कर देंगे और एकदम सस्पेंडेड रहेगा। एक हैमर ले लेंगे, किस लिए? फॉर हैमरिंग द बार, बार को हैमर करने के लिए उस पे हैमर से स्ट्राइक करते हैं। किधर से? दोनों साइड से नहीं, ओनली वन साइड, फ्रॉम ओनली वन साइड। द बार, iron bar is hammered from only one direction. They for sometimes then the iron bar behaves like a magnet. Next method, a iron bar is taken and a magnet is taken, and from one pole of the magnet, either south pole and or north pole, the one through the one pole of magnet is moves along the iron bar several times, है ना? Magnet is allowed to move on the iron bar from one side of its magnetic pole. When the magnet moves on the iron bar for several times, after several times, the iron bar behaves like a magnet. एक आयरन बार को ले लेते हैं और फिर एक मैग्नेट को लेते हैं, और मैग्नेट के एक पोल से, किसी भी एक पोल से वो क्या करते हैं? आयरन बार के ऊपर रन करते हैं, मूव करते हैं सेवरल टाइम, बहुत बार। तो आफ्टर सेवरल टाइम मूविंग ऑफ अ मैग्नेट, द आयरन बार बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आयरन बार जो है सेवरल टाइम उसके ऊपर मैग्नेट को मूव करवाने से एक, लेकिन क्या है इसमें, क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर नॉर्थ पोल को रन करवा रहे हैं उसके ऊपर से, तो ओनली नॉर्थ पोल शुड रन अबव द आयरन बार। आयरन बार के ऊपर नॉर्थ पोल ही रन करना चाहिए। देन द आयरन बार बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। And the third way by which we can make the magnet, that is a iron bar is taken and a magnet is taken. Iron bar, है ना? Iron bar or magnet, both are taken. One magnet in my hand. I suppose that it is magnet. I'm supposing it. It is a magnet, and the pencil represent the iron bar. When the magnet and iron bar place with each other for longer duration of time, then the iron bar behaves like a magnet. एक मैग्नेट और एक आयरन बार को एक साथ रख करके छोड़ देते हैं, कितने समय तक? लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक, 2-3 महीने तक। तो ये आयरन बार के कैसा बिहेव करने लगता है? जस्ट लाइक अ मैग्नेट। One thing all of you are knowing, making the electromagnet, when the iron bar is taken and the insulated wire, one more method, insulated wire is taken and it is wrapped on the iron bar. One end of the connecting wire added to the positive terminal of the battery, another negative terminal of the battery. Then it behaves like a magnet. When the current flow through the insulated wire, then the combination of insulated wire and the iron rod behaves like a magnet. That is the electromagnet. All of you have studied in a starting day, first or second day. Excuse me, ma'am. हाँ मैम बोल रही हूँ कि मैम अगर हम लोग आयरन बार के ऊपर हम लोग अगर मैग्नेट रख देते तो वो 2 महीने के बाद वो मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करने लगता है? क्योंकि उसके अंदर वो जो है ना, जो सारे ऑब्जेक्ट कल भी बताए थे
कि जो भी मटेरियल आयरन देख रहे हो, कोबाल्ट देख रहे हो, निकल देख रहे हो, तो वो बना हुआ है एटम का। और एटम में 3 जो है ना एकदम स्मॉल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मूव करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो उसके इन्फ्लुएंस में, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में आकर के जो आयरन का जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैसा होगा, अनपेयर्ड हो जाता है, एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और इसके वजह से जो है आयरन बार भी मैग्नेट की तरह बिहेव्स करने लगता है। ये जो कोई भी मटेरियल जो है वो आयरन, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, किसी भी मटेरियल को अगर वो अट्रैक्ट करता है आयरन, कोबाल्ट और निकेल को, तो उसके लिए उस मटेरियल में होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेटा ये जो पढ़ोगे ये जो है ना 11th-12th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, है ना। इसीलिए कारण नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि when iron bar is taken and it is kept with the magnet for longer duration of time, iron bar behaves like a magnet। केवल इतना पढ़ना है। उसके एक्चुअली मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में, मैग्नेट के प्रभाव में, वो जो आयरन बार में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो जाता है, अनपेयर्ड करके फ्लो करने लगता है, तो इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए मैम, मैं ये बोल रहा था कि मैम अगर मैम ऐसा होता है कि आयरन को डालेंगे अगर मैग्नेट के ऊपर 2 महीने के लिए छोड़ देंगे तो फिर बन जाएगा मैग्नेट। तो हाँ। मैम मैग्नेट जिसके ऊपर रखा गया था मैम आयरन बार, हाँ। वो मैग्नेट मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। हाँ, वो भी उसके पास रहना चाहिए, उसके नजदीक में रहना दोनों के चाहिए। पास आ जाएगा मैम। हाँ। दोनों के पास आ जाएगा। हाँ, दोनों के पास हो जाएगा। ओह, थैंक यू मैम। वेलकम। अब नेक्स्ट ये आपको ये सभी को जानना है। 3 मेथड इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको जाना है इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेट, और 3 मेथड ऑफ क्या है, मैग्नेट मेकिंग। नाउ फाइंडिंग द डायरेक्शन। अब देखिए सी में, हाँ बोलिए मैंने ईशानी, ऋषिका बता बेटा, ईशानी क्या बोल रही है, थोड़ा हम समझ नहीं वो पा बोल रहे। रही है मैम वो हाँ। बोल रही है कि मैग्नेट क्यों चिपकता है। मैग्नेट क्यों चिपकता है? ईशानी, मैग्नेट में बेटा उतना पावर होता है कि वो अपने साथ जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले, अट्रैक्शन के वजह से चिपकता है। अट्रैक्शन पावर होता है, उसमें खींचने का पावर होता है बेटा, और उसी की वजह से वो चिपक जाता है। जैसे ही मैग्नेट लेते हैं ईशानी, ये मेरे तरफ देखो बेटा, ये आयरन बार है और ये हमारे हाथ में मैग्नेट है। सपोज कर लो